So very good morning to all of you, and I also take this opportunity to greet respected Professor Pande and my very dear friend Dr. KP Singh. Since this session and this course is confined majorly to the students, so I'll moderate a bit to ensure that it suits to the requirement of fresh learners. I will not pitch from a very advanced level, otherwise these topics are so important that we can look into these subjects from very different perspectives. But considering the fact that many of you are just having your first brush with the procedural law, then the need is to keep myself very simpler. And I'm also mindful of the fact that a lot of things have already been covered since yesterday and also today. Dr. KP Singh has covered mostly a very wide sweep of the changes that CRPC has seen. So I will look into the theme that we have slated for today, and all the students who are listening me, at any point of time, if you think that something is becoming complex, ऐसा एक कहा जाता है कि अगर कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही है तो समझ लेना कि कोई बहुत ज़रूरी बात कही जा रही है, हाँ ठीक है ना. So you can always speak to me कि ये क्या है. I would begin with not something, and I will leave a lot of things which Dr. KP Singh has already, there is no need to repeat. So the theme has been slated like reimagination of CRPC, criminal procedural law, with two very important pillars, power balancing and victim centricity. I will go back to this entire idea of reimagination, because a lot of reimagination has already been taken place, because of which we have the new criminal procedure code here. But I am giving you something here which will be very helpful for you, and probably not many people will talk about it, because all other things are written in the text of the law, so you can read it, what are the changes, how the changes have taken place, since a lot of audit is yet to be done, because we have not yet completed 2 years of these new criminal laws. So first thing about the criminal procedure which always intrigued me is, this law looks depends on the person who is looking at. So suppose a judge is looking at the criminal procedure, his understanding will be very different. For him, CRPC is a manual to conduct the trial. When a lawyer looks at criminal procedure, for him, it is for his case, which is very important. So he would read CRPC from that viewpoint. A teacher of criminal law would study probably the CRPC from a more juristic and philosophical and theoretical lens, and a student also. So depends who is studying CRPC is very important. So these standpoints are very important, and it is a very mysterious document, and it will appear and manifest in many ways depending on who is looking at. My insistence would be that nobody would look at the theories and values which are so fundamental in the procedural law, and these are not manifestly mentioned. So try to capture, because when these laws were under process, somebody asked me after the bill came out, I said a text of law has changed, but the principles of criminal law remain the same. Principles don't change. So in CRPC, what remain constant over the years are the principles and the values. And what are those principles and values? So if as a new learner, if you start learning the principles governing the entire architecture of criminal procedure law, that will go a long way with you. If you start with provisions, you will not be able to understand. So remove the provision, first understand what are the principles and where you read the principles. I'll give you an example. See, there are two things which are very crucial as far as this law is concerned. One is, we always say,
Article 21 says procedure established by the law. This is the procedure established by the law. So if somebody's freedom, liberty, etc. has to be intervened, there has to be a procedure. Mind you, criminal law, this law is the law which deliberately gets into the intervention or intervening of the liberty and freedom of the people, as against the guarantee which the Constitution provides under Article 21. Therefore, this becomes the guiding line. So please read criminal procedure as a kind of measure where you say the procedure established by the law. Means somebody has to be arrested, confined, taken into custody. There has to be procedure. And how the procedure look like? Procedure has to be just, fair and reasonable. You know? These values you can read in every section of CRPC. And whenever CRPC is audited, criticized, evaluated, the rationale will three-pronged: fairness, justness, and reasonableness. And Menka Gandhi, this was due process. Now, adherence to due process is the hallmark. So please read CRPC's every section. If you have to understand, because Dr. K.P. Singh was auditing the sections, you have to, what is your checklist? What is your standpoint of audit? Whether the procedure is fair, just and reasonable or not. So you will yourself understand, because a lot of debate goes on arrest, remand, custody, and every time these three things become the core question. So values in CRPC, and the fourth value, which is so important, this value is about the balance between individual liberty and state power. Read this word balance everywhere. CRPC tries to calibrate this balance. This is the struggle. So three tension points I suggest that you need to read if you are intending to imagine or reimagine CRPC. What are the three? Police power or state power versus individual liberty. This is the first, very important. Now it is your responsibility to read. Where you read, CRPC doesn't start like that. You have to read how the police powers, to what extent the police powers have been curtailed. And second, I will come to that. Second, efficiency versus due process. This is the value. What is the value? I have said fairness, justness, reasonableness. Now efficiency versus due process. Because a lot of people now get into this impression that CRPC has been made now very quick. Guidelines are there, police powers are there. But fact remains that the due process is in the center. Due process continues to be the guiding light. So efficiency at times comes into conflict with the due process. Any example where you find efficiency becoming a challenge to the due process? So Operation Langda in UP, you know, efficiency. The UP model of leg shooting is very efficient. People are fearful, and claims are that everything is fine, law and order is well in control, it was never before. Efficiency has been achieved, but due process has been compromised. So what is sacrosanct? A lot of people like you in UP vote for efficiency, but they fail to understand that a country who situationally may gain from efficiency, in the long run would lose the rule of law. So if you believe that rule of law and due process are the core parameters, then you have to define the requirement and the dimensions of efficiency. So Herbert Packer crime control and due process model comes here in the question. Now the issue is third thing. 3. Victim centricity versus state monopoly on prosecution. Victim rights in BNSS are real,
but structurally incomplete. So these are a couple of tension. But I will again come back to you to say those things which are very seminal and core. The core of CRPC has to be read by the student. Before you read the provision, I'm insisting. Here we have evolved a new methodology of CRPC teaching. We don't just jump to the conclusion. We provide an insight into the principles governing the sanctity of procedural law. So what are those principles? I have given you some. I am giving you. The first thing is we understand the presumption of innocence. Now, entire CRPC is an effort to protect the accused in terms of providing the rights and entitlement. I am talking imagination, reimagination of CRPC. Because law has changed. People say law has changed. I say text of the law has changed. Principles of criminal law have not changed. And they cannot change. So even CRPC, again, criminal procedure, after 30 years it may change, but these things will remain same. No, but these are undisputed things. So when the exercise began for criminal law reform, I was called to make a presentation in the Ministry of Home Affairs. We proposed 11 principles. They said, why these principles are important? I said, you may moderate text X, Y, Z dimension, but these principles will continue to inform the structure and architecture of criminal law. And that is the fact. So presumption of innocence is very important, and a lot of dangers you will see looming large on the requirement of presumption of innocence, because we are losing patience to provide this protection to the accused, thinking that this will be delayed because the person would try to protect. So quick justice, kangaroo justice, leg shooting, parading the person, and all those kinds of things come when you think that presumption of. And second guarantee was the adversarial system itself. We have borrowed an adversarial system. Malimat was criticized vehemently when he said we should have an inquisitorial kind of system and element. People said, fine, that may provide speed to the system, but it can compromise the standard of presumption of innocence. The current crisis, if you read, a lot of laws are being created where the reversal of burden of proof is happening and presumption of innocence is being compromised, especially in PMLA, UAPA and all that, because that is little shortcut. But choice is whether to go for shortcut and achieve efficiency or preserve the sanctity of rule of law and due process. That is very important. Now, right to know the accusation and evidence. This continues to be very important. So person should know. Then right to legal aid and right against self-incrimination, right against arrest and detention. So these are few basic standards. Now we are talking about police power, balancing and all those things. So in three heads I will discuss, because power of arrest is the first thing which is very critical when you talk about the balancing of power. Second thing is the custody and remand, and third thing remains search and seizure. These three areas are very critical, where you will see a lot of overstepping by the police. And now you have to understand whether the changed law, CRPC provisions change, has resulted into any kind of change impacting the power of arrest to the part of police. So say I will not be able to, I can give this entire paper which I have prepared. So what has actually changed when it comes to the law of arrest? So earlier 41 continues to say that the requirement of cognizable offense carrying below 7 years punishment, arrest without warrant was permissible. Now see 35. It is largely the same, but the standard remains very subjective again. The officer records their reason and there is no real-time external check on that. So that is a very subtle space where arrest can, and earnest standard has not been adequately brought into the statute. That is another problem. I don't have time to go on to that. But point remains
that in 43 subclause 3 we brought handcuffing. Now handcuffing looks very simple thing, उसमें क्या हो गया आप कहेंगे, but this is a message. This is the state message to the people that look, handcuffing is possible, public handcuffing. So, however, Supreme Court in Prem Shankar Shukla said that it is an inhuman thing, but it is still there, so you have to look at that. Custody and remand thing, there are few things which you can see. Again, Dr. KP Singh has talked about, much talked about that 15 days custody. I'm not going into that. But I think lately the high courts, in many, like Karnataka High Court, they say in Heather Ali case that for offence carrying a maximum sentence of 10 years or less, the 15-day police custody must be sought within the first 40 days. वो कह रहे हैं आप first 40 days में you should do it of the investigation, not freely across the 60 days window. So there are high courts who are actually moderating this particular thing in their own way, and a lot of confusion is there. Now the 176 about the digital evidence is it interesting. Police officer can search without warrant in urgent circumstances. Now this urgent within inverted comma is a problematic area which can actually encroach the citizens' right thing, because urgency is a very subjective thing, and therefore it can be looked into seriously. Supervisory mechanism continues to be there as far as the magistrate supervisory mechanism is concerned, but the structural reality remains, because many CHRI and they have come out with some studies that these remand hearings are very, very perfunctory. They said the first hearing takes place properly, but subsequent hearing, what is happening, is not really known. The provision doesn't prescribe a heightened standard or a detailed scrutiny superficially for second or subsequent remand proceedings in staggered custody scenario. This is also something very, very important. Statutory rights on arrest, there is one thing that I would just draw your attention. However, they claim that D.K. Vasu was adequately appreciated. But if you see the guideline number 11 of D.K. Vasu, it remains the custodial conduct benchmark, only partially codifies the law. Here, you will see the section 48 says that information at the time of arrest will be given to thee. Now, inform is a very problematic. It doesn't mean involve. Inform and involve. So you have to actually involve means the person has no right to be present or object or seek independent medical examination, because you are being informed, not you are being involved. That is another issue. Now, I think time constraints are there, so I'm just rushing through. So there are other things also which are very interagency power. I don't have time to deal with. Otherwise, if you see the power of arrest in PMLA and ED related search, they continue to be the same. Though you are trying to curtail the police power, but as far as the enforcement directorate operates largely outside the BNSS framework, arrest under PMLA under say section 19 follows a very distinct procedure. So bail remains heavily restricted under PMLA section 45, which imposes certain conditions there. So Supreme Court has in two cases, in Vijay Madanlal and Pankaj Bansal, they have expressed this particular thing. Similarly, CVI jurisdiction. So when we talk about the power balancing, we also have to look at how other agencies are actually doing the things. Now, victim centricity, Professor Dr. KP Singh has already pointed out. We have an upcoming session perhaps tomorrow, so we will discuss those things there. But here, in order to recap, just
So custodial access, handcuffing, forensic compulsion, digital search and seizure, how citizen rights are impacted is something very, very important, and therefore certain ideas in this respect continue to be there. But the point that I will wish to recap is, you must understand, because when Jerome Hall undertook the reform in American criminal procedure, he also brought a value-based blueprint for procedural law. What are the essential values which must be kept in the center as far as the operation of criminal law is concerned? Because fact remains, then when a law is given to the police, I said in the beginning, this law looks them pretty functional. They said we can get away with anything. The law which you think is very well drafted and very well protected and provide a lot of protection, they can afford to play with this law. And therefore you will see the extra legal things are also continuing despite these reforms and changes. However, it is too early to say whether these criminal law reform have actually impacted the police high-handedness in a certain way or not. That thing will come up very soon. So I close here. Thank you. You cannot even deal with any procedure, even the worst criminal. Even terrorist Kasab had to be given a fair trial. Raju Ramchandran argued on his behalf. So that is the idea of procedure law. Procedure law says we'll deal with him even if he is the worst criminal. He gets liability of death sentence. There are so many people who get extreme penalty, and under the Bharatiya Nyaya Sanhita, 9 offences, number of offences have gone up. One gets death penalty. Under all laws, I think Vidhi Center has central laws. There are, I think, more than 130 offences for which death penalty is the punishment. We are punishing society in that sense, death penalty, and life imprisonment till the end of natural life. 41 cases in BNSS, no, 21 cases, and 41 cases up to 10 years, etc. So, the question is, what is the procedure? Herbert Packer, in Limits of the Criminal Sanction, has used criminal procedure law allocates competencies. He has used not power. It doesn't allocate powers. Power gives a sense of unlimited power. पुलिस के पास unlimited power है, मजिस्ट्रेसी के पास unlimited power है. Herbert Packer uses the term competencies. मजिस्ट्रेट इस चीज के लिए competent है, लेजिस्लेचर इस चीज के लिए competent है, पुलिस इस चीज के लिए competent है. बस जिस चीज के लिए competent है उतनी ही पावर है तुम्हारी, अनलिमिटेड पावर नहीं है. And Herbert Packer, in Limits of Criminal Sanction, he has said that the law, criminal procedure law, and he uses criminal procedure and substantive criminal law together, limits of the criminal sanction. वो कहता है कैसे criminal law actually apply करता है. लॉ मेकिंग स्टेज से लेके और इन्फोर्समेंट स्टेज तक. एग्जीक्यूटिव स्टेज अलग है जिसमें पुलिस एंड प्रोसिक्यूशन है. पुलिस एंड प्रोसिक्यूशन कोर्ट से डिफरेंट है. क्यों डिफरेंट है? बिकॉज कोर्ट्स आर इन पब्लिक डोमेन.
They don't act in secrecy. They don't operate in privacy. पुलिस के फंक्शन ही इस तरह का है. इन्वेस्टिगेशन सबको ढोल बजा के तो इन्वेस्टिगेशन होता नहीं. आजकल हो रहा है मीडिया में, ये गलत है. वो पुलिस फंक्शन का स्वरूप ऐसा है कि इट हैज़ टू बी डन इन सीक्रेसी एंड पुलिस हैज़ पावर टू डू इट, कॉम्पिटेंस टू डू इट, इन्वेस्टिगेशन. मगर आजकल मीडिया का इतना वो हो गया है कि हर चीज़ पुलिस से पूछी जाती है और पुलिस वाले भी बहुत खुश होते हैं कि हमको साहब बताने को मिल रहा है. देखिए हम बहुत, दिस इज मीडिया एक्सप्लोजन, नथिंग बट पुलिस acts in secrecy, not in public domain. Unlike police and prosecution, courts function in public domain. डिफेंस लॉयर है और प्रोसिक्यूशन लॉयर है. सवाल हो रहे हैं, जज पूछता है आपने क्या किया, बेल क्यों न दें. वो कहें बेल मत दीजिए, वो कहें बेल दीजिए. सीरियसनेस ऑफ क्राइम नहीं देखा जाएगा. यूएपीए है, उनका नहीं आर्टिकल 21 है, उसमें लिखा है राइट लिबर्टी ऑफ द सिटीजन. देयरफॉर इट इज इन पब्लिक डोमेन. दिस इज ए डिस्टिंक्शन. तो हर्बर्ट पेकर ये कहता है, इसीलिए जब डेफिनेशनल रोल लॉ कौन तय करेगा, तो उसने कहा प्राइमरीली इट इज़ द रोल ऑफ लेजिस्लेचर. अभी इनसे बात हो रही थी, जुवेनाइल लॉ चेंज हो रहा है, कोर्ट्स चेंज कर रहे हैं. एंड सेकेंडरीली द कोर्ट्स. पेज 73 में हर्बर्ट पेकर ने लिखा है कि एंड नो वन एल्स. इन दो ही का काम, डेफिनेशनल रोल, पनिशमेंट क्या होगी, क्राइम क्या है, ये सिर्फ लेजिस्लेचर डिसाइड कर सकता है. प्राइमरी रोल उसी का है. सेकेंडरी रोल इंटरेस्टियली इन द कोर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन कोर्ट्स का है. एंड टू नो वन एल्स. डेफिनेशन कोई नहीं, पुलिस वाला डिफाइन नहीं कर सकता क्राइम क्या है. इसीलिए मुझे एक श्रीलंका की पीएचडी आई, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, बहुत हाई फाई उनकी पीएचडी थी. उनकी थीसिस ये थी कि पुलिस शुड डिफाइन राइट्स एंड नॉट कोर्ट्स. तो मैंने कहा गलत है, ये आपने उलट दिया. उनकी किताब में रिकमेंडेशन लिखी हुई है बहुत से लोगों ने कि साहब इनका तो इतना अच्छा काम है, इन्होंने तो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल कर दिया श्रीलंका में. मैंने पीएचडी को रिजेक्ट किया. मैंने कहा ये तो भैया गलत हो गया. आपने लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल कर लिया, वो आपका रुतबा है, वो अलग चीज़ है. ऐसे तो बाहुबली भी कंट्रोल कर लेते हैं. वो बाहुबली थोड़ी पुलिस बन सकती है. वो तो कोर्ट्स, राइट तो कोर्ट डिसाइड करते हैं. फिर लंबी उसको, उसमें बड़ी तारीफ वो उन्होंने भेजा था, इनकी यहाँ बड़ी तारीफ हो रही. फिर रिपोर्ट मैंने तफसील से लिखनी पड़ी, 12 पेज की रिपोर्ट लिखनी पड़ी. मैंने कहा मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा कहीं नहीं होता है. श्रीलंका में अगर आप करोगे तो हंसी होगी और हमारी भी हंसी होगी, इसलिए हम नहीं देंगे. तो देयरफॉर पुलिस में बी वेरी गुड, पुलिस में बी वेरी ट्रस्टवर्दी, बट उसका स्वरूप ऐसा है, स्वभाव ऐसा है, उसकी फंक्शंस ऐसे हैं जो कोर्ट से भिन्न है. इसलिए हर्बर्ट पेकर कहता है वी हैव टू बी वेरी कॉशियस. इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन हैज गॉट टू बी. पुलिस चलता है प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट से, लॉ चलता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस से. अगर हम पुलिस के प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट को मान लें, पुलिस वालों ने कहा तो इसलिए कन्विक्ट कर दो. नहीं, आपको एविडेंस लानी पड़ेगी. अगर आपने देखा भी है तो भी आपको एविडेंस लानी पड़ेगी. आपकी आंख के सामने हुआ, इससे कुछ नहीं, आप एविडेंस लाइए. विटनेसेस हैं,
विटनेसेस कोई नहीं, अरे हमने देखा है बहुत ख़राब आदमी है, बहुत ख़राब आदमी को भी एविडेंस लानी पड़ेगी, क्योंकि प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट इज नॉर्मेटिव, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इज नॉर्मेटिव, प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट इज डिस्क्रिप्टिव। हर्बर्ट पेकर पेज 191-192 में कहता है, बहुत अच्छी तफसील से वो डिस्क्राइब करता है। Therefore, I will only talk on the colonial criminal procedure law was modeled not for free people but for subjects who were ruled by firm imperial despotism. ये मैकॉले ने अपने 1 मिनट में कहा है, Indian people cannot get a free law, but it is to be ruled by firm imperial despotism. However, the rulers were mindful of legitimacy through the British idea of rule of law. उसके बावजूद राजाओं की लेजिटिमेसी के ऊपर हमारी ब्रिटिश रूल ऑफ लॉ वाली लेजिटिमेसी है। इसके आधार पर हम एक रूल ऑफ लॉ का फसाड बनाए हुए हैं, इसलिए हमारा सिस्टम बेटर है, क्योंकि राजा उनके साथ कॉम्पीट कर रहा था। अनलाइक देम, द ड्राफ्टर्स ऑफ न्यू क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ were fully aware of the constitutional mandate. इनको constitutional mandate को ध्यान में रखना है, and a robust judicial process context. यहाँ robust judicial process है। नीरज तिवारी साहब, वो आपके क्लास में जो judiciary has got to be educated, efficient judiciary or ignorant judiciary? Judiciary is ignorant or efficient? किसी ने सवाल पूछा था तो मैंने ये कहा judiciary has to be educated. इसका मतलब that would be a sad day, because judiciary has to keep in mind the mandate of rule of law, the principles about which Professor Bajpai was talking so elaborately and so well. But still, they were expected to provide a strong, technologically efficient criminal justice system that could keep crimes under control. आज जो BNSS बना है, उसके सामने ये चैलेंजेस हैं। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, दूसरी तरफ रोबस्ट जुडिशरी, तीसरी तरफ growing crime and saving the society from the menace of crime. Therefore, the reimagination of procedural laws center around 4 critical issues, 4 critical issues हैं, namely effective control of criminal behavior, efficiency of the criminal justice system, augmenting and realignment of powers of the agencies, and victim justice. Professor Bajpai has so elaborately spoken on it, and in the next session he will. Now I only talk about effective control of criminal behavior, the first issue. This is contingent upon availability of skilled manpower. कहाँ ओवरनाइट मैन पावर कहाँ से आएगी? कहाँ फोरेंसिक एक्सपर्ट्स आएंगे ओवरनाइट? इफ़ यू क्रिमिनल जस्टिस जो हर साल आता है, इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स पुलिस पोस्ट्स आर remain unfulfilled for the last 20 years. Sanctioned posts or filled posts. Therefore, an efficient manpower कहाँ से आएगी?
पुलिस पॉपुलेशन रेशियो इंडिया में मेरे ख्याल से यूएन स्टडीज शो दैट इट इज़ फेयरली लो as compared to many countries. And to cap it all, growing incidence of crime. Growing incidence of crime not because we are very criminal people, but because also growing number of crimes every year, every state thinks that it has to compete in making new crimes. Panel 2 में हम लोगों ने ये डिस्कशन किया, पॉलिसी ऑफ न्यू क्रिमिनलाइजेशन, फेथ को क्रिमिनलाइज कर दो, मैट्रिमोनियल फ्रीडम को क्रिमिनलाइज कर दो, स्पीच को क्रिमिनलाइज कर दो, ब्लास्फेमी, सब हर स्टेट, हेट क्राइम. आई एम नॉट critiquing them, but number of new crimes coming up. इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर कैसे होगा? क्रिमिनल बिहेवियर तो स्पाइरल कर रहा है, उसका कंट्रोल कैसे होगा? कंट्रोल करने के मैकेनिज्म आपका बिल्कुल प्रिमिटिव है. Therefore, that is a challenge which the BNSS has to face. Efficiency of criminal justice system. Speedy disposal के many provisions are there. They have time frame. Within this period, trial should be completed. Within this period, judgment should be delivered. Within this period. But at the ground level, when we match it up with paucity of officers in the courts, in the prosecution department, all this fails. If Professor Bajpai conducted a study of how much time it takes, time frame जो इन्होंने प्रीमियर बनाया है NUJS कैलकाटा की जुडिशल एकेडमी ने, वो एक टाइम फ्रेम बनाया है उन्होंने, कितना टाइम लगता है. आप एक स्टडी, एक साल की स्टडी या पिछले 2 साल की स्टडी कर लीजिए, तो यू विल बी एबल टू नो कितने केस विद इन टाइम फ्रेम आ पाए हैं. और फिर उसमें जाने की ज़रूरत नहीं किस कारण से नहीं आ पाए हैं. टाइम फ्रेम, स्पीडी डिस्पोजल कैसे होगा और कहाँ कहाँ पर लेचेज हैं. डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन डिजिटल टेक्नोलॉजी इन इनपुट ऑफ टेक्नोलॉजी विद इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. बहुत जगह अभी भी कंप्यूटराइजेशन, डिजिटलाइजेशन, पर्टिकुलरली इन डिस्ट्रिक्ट्स इन छत्तीसगढ़, even in UP, there has not been. हेडक्वार्टर्स में लगा होगा टीवी वगैरह, बट हम एक सोसाइटी विच हैज़ बीन शिफ्ट टूवर्ड्स द थर्ड इज. अब इस सब का हम लोग सोल्यूशन ढूंढते हैं, शिफ्ट टूवर्ड्स क्राइम कंट्रोल मॉडल. क्राइम कंट्रोल लगाओ, एफिशिएंसी होनी चाहिए. क्राइम कंट्रोल मॉडल पुलिस के पास है. पुलिस के ऊपर ओवर रिलायंस ऑन पुलिस, सब पुलिस कर लेगी. प्रोसिक्यूशन वीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है, टेक्नोलॉजिकल इनपुट नहीं प्रोवाइड की गई है. पुलिस वाले का तरीका तो पुलिस या तरीका है, वो अपने तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करेगा. विद द रिजल्ट दे आर creating an impossible situation in which we have come. Efficiency versus crime control model का जो basic premise है, वो efficiency is the basic premise of crime control model. Conviction rate should be high, more prosecutions, more people in the crime mill, and standardized procedures to be followed, and don't bother about fair trial, all these sensitivities. हमको क्राइम
कंट्रोल करना है, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ क्राइम. नाउ Herbert Becker again, he has compared crime control model with due process model. Chapter 8 of his book is a classical, and he says, thus crime control model leads to an affirmative model that emphasizes the existence and exercise of public power. Its validating authority is ultimately legislative, although proximately administrative. But the due process leads basically to a negative model with limits on the nature of official power and mode of its exercise. Its validating authority is judicial, that is founded on ultimate appeal to supra-legislative law or the constitution. हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट से बने हुए, मैंने बिगनिंग में बताया था. हम लोग रोबस्ट जुडिशरी के डिक्टेट से बंधे हुए हैं, जैसा मैंने पहले बताया था. और उसके बीच में ये चमत्कार करना चाहते हैं क्राइम कंट्रोल मॉडल का. बहुत डिफ़िकल्ट है. क्राइम कंट्रोल मॉडल सर्वाइव नहीं कर पाएगा इसमें, और इसीलिए क्राइम कंट्रोल मॉडल इज अंडर ग्रेट स्ट्रेस. And that is reflected. And the third issue, which I will only touch upon, is several provisions providing for preventive action by police, that is recalibration of power balance. Power balance under the BNSS has shifted from magistracy to the police. वो श्रीलंका वाली PhD याद आती है. हम क्या नहीं कर सकते. सेक्शन 15 में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट comprising of senior police officers, and most of the places judicial magistrate stroke executive magistrate. सेक्शन 524 में लिखा हुआ है, Legislative Council of the state can confer powers on executive magistrate of first class magistrate, first class judicial magistrate. तो फिर आपने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पहले सेक्शन 15 में आपने पुलिस वाले को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बना दिया, फिर आपने उसको 524 में उसको फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर से कन्फर कर दिया. तो बहुत अच्छा है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन गया पुलिस वाला एसपी साहब. बट एसपी और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के काम बिल्कुल अलग हैं. उनकी फंक्शनिंग, उनकी ट्रेनिंग, या तो जुडिशियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बंद कर दें, उनकी ट्रेनिंग बिल्कुल अलग चीज़ है. रूल ऑफ लॉ की ट्रेनिंग है. इनकी ट्रेनिंग इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ पर ट्रेनिंग है. पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में और जुडिशियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अंतर है. प्रोफेसर वाजपेयी तो जाते हैं सब जगह, हम तो अब कम बुलाए जाते हैं. तो उनको मालूम है ये तो वहाँ पर कहाँ था आप थे, औजला साहब के साथ, पंजाब पुलिस एकेडमी. पंजाब पुलिस एकेडमी. पंजाब पुलिस एकेडमी में मैं इनसे पहली बार मिला. ये औजला साहब के साथ थे पुलिस एकेडमी में. तो वहाँ दूसरे किस्म की ट्रेनिंग होती है. वहाँ एसपी श्रीवास्तव साहब ने जब विक्टिमिटी की बात कर दी तो उन्होंने कहा कि आइए साहब आप हमको बताइए ये क्या चीज़ है. ऑल इंडिया पुलिस साइंस कॉन्फ्रेंस. हाँ, पुलिस कॉन्फ्रेंस में. और वहाँ पुलिस एकेडमी में रात को कमरे में वो 2 सिपाही गार्ड कर रहे थे. एसपी श्रीवास्तव ने कहा हम लोगों को नींद नहीं आएगी, भाग जाइए आप लोग यहाँ. उनका नहीं, डायरेक्टर ने कहा है या पंजाब में इस वक्त
टेररिज्म हो रहा है तो इस वक्त सिक्योरिटी की ज़रूरत है, 2 गार्ड बैठे हुए बंदूक लिए हुए। हमने कहा हम 2 लोग यहाँ, मास्टर लोग सो रहे हैं। तो दैट वाज द सेवरल प्रोविजंस इन द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। Therefore, I just round up. There has been a pushback to this trend of shift towards executive. And the first pushback came in 2025, एक साल के बाद, from the Supreme Court decision in Pradeep Nirankarnath for the state of Gujarat 2025, then in Vihan Kumar versus state of Punjab 2025, then Ashish Kakkar वाला केस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें हथकड़ी लगा के एक आदमी को अरेस्ट करके अस्पताल में, वो हार्ट कंडीशन थी तो वो हथकड़ी लगी हुई थी आशीष कक्कड़ के केस में। और फिर इमरान प्रतापगढ़ी वाला केस जिसमें जस्टिस ओक का बड़ा फेमस जजमेंट आया 2025 में। उसने एक पोएम पढ़ी थी और पुलिस वालों ने बिना पोएम को समझे हुए, होम मिनिस्ट्री ने कहा इसको खिलाफ तगड़ी धाराएं लगा दो। सुप्रीम कोर्ट में छूटा वो। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ओक ने कहा पहले तो पुलिस वालों को सबको पढ़ना लिखना सिखाओ, 175 BNS जो है वो धारा समझाओ, फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाओ, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो सब पढ़ाओ। वो केस इमरान प्रतापगढ़ी वाला पढ़ो, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। तो फर्स्ट पुशबैक। और द सेकेंड पुशबैक हैज़ कम फ्रॉम few इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसीजंस, जहाँ प्रोफेसर वाजपेयी कह रहे थे कि लॉलेसनेस एफिशिएंसी के नाम पर ऑपरेशंस होते हैं, एफिशिएंसी के नाम पर सभी स्टेट्स में हो रहे हैं। महाराष्ट्र में गले में फंदा लगा के जानवरों की तरह उनको घुमा रही पुलिस। ये हमारा स्टाइल है, बाहुबली स्टाइल, पुलिस का बाहुबली स्टाइल। बंगाल में नंगा अंडरवियर पहना के तृणमूल वालों को घुमाया, हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया। सो आप उनके खिलाफ क्राइम इन्वेस्टिगेट करो और उनको तगड़ी धाराओं में बंद करो और कन्विक्ट करवाओ, एविडेंस लाओ। और कोर्ट से ये मत कहना कि आप इनको कन्विक्ट कर दीजिए पहले और फिर एविडेंस बाद में लाएंगे, ऐसा नहीं। कोर्ट तो कोर्ट है, हमारी मजबूरी है, हमने यही पढ़ा है जुडिशियल एकेडमी में और यहाँ क्लासरूम में यही पढ़ा है हम लोगों ने। मास्टर लोग भी गलत बातें बता देते हैं, ये सब ऐसा है रूल ऑफ लॉ। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 डिसीजंस एंड आई वॉज यस्टरडे वेरी प्रेजवर्दी ऑफ प्रिंट मीडिया डूइंग व्हाट वी शुड हैव डन। कल हिंदू में फिर एक एडिटोरियल आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के केस के ऊपर, जिसमें चंद्रपाल सिंह वाला केस, जिसमें उन्होंने अरेस्ट कर लिया एक लकवाग्रस्त एडवोकेट को और उसके नेव्यू को अंडर NSA, चंद्रपाल सिंह वाले के प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ लगा दिया। तो ये एडिटोरियल में कहता है हाईली इररिस्पॉन्सिबल deprivation of personal liberty in Uttar Pradesh, where police officers and executive magistrates were using preventive powers to incarcerate individuals on the basis of arguably minor civil wrongs. लैंड डिस्प्यूट था कुछ, उन्होंने NSA लगा दिया। है हमारे पास पावर है, हम कर सकते हैं। उन्होंने कहा ये आप कर क्या रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग? एंड हाई कोर्ट इन चंद्रपाल्स केस
acquitted. And more significant is a case which came, which should be read in the beginning. The case of Rajendra Tyagi, about which I said in the beginning also, a housewife of 35. क्या करती हो? कुछ नहीं, हाउसवाइफ हैं, रोटी बनाते हैं. उसका हस्बैंड बाहुबली होगा तो उसको भी पकड़ लिया गया और गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया. गैंगस्टर लगा दिया तो गैंगस्टर का एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर नहीं फॉलो किया गया. कमिश्नर साहब ने कहा वो प्रोसीजर हमको फॉलो करने में डिफ़िकल्टी हो रही थी, इसलिए हमने फॉलो नहीं किया. अरे उसमें लॉ में प्रोसीजर लिखा हुआ है, आपने प्रोसीजर नहीं फॉलो किया. एंड see what the court at para 62, 63 and 66, please take my little indulgence in reading out what the court said. A systematic and deeply entrenched culture has emerged within the consideration of section. This is the case of Rajen Tyagi and others versus State of UP. This is 2026 Supreme Court cases online, Allahabad, 13,884. इसमें वो पैरा 62 में कहते हैं, officer cadre treats the rule of law not as a constitutional obligation but as an operational inconvenience. Arrests are effected without due process. Many times FIRs are registered or suppressed with ulterior motive, and preventive detention provisions are invoked arbitrarily at the whims of the officers. The procedural safeguards under Code of Criminal Procedure and now the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita are routinely bypassed. Judicial orders are complied with in form of defeated in substance. The vertical loyalty of officers runs not towards the Constitution but towards the ruling dispensation. Field officers, actually conscious of the transfer posting economy, calibrate their conduct to satisfy political superiors. Encounters, killings, selective crackdowns, and targeted use of judicial notice, etc. Yeah, it reads a kind of horrendous lawlessness that is prevalent. And therefore, this is the judgment of Justice Vinod Divakar. This is a bench of Justice Divakar and Allahabad High Court. In the third case, which is again a habeas corpus petition, Mansoor Ahmad versus State of UP, again in 2026. Mansoor Ahmad was arrested and for a crime which was a civil dispute of property. It was averted that no person is detained in custody under 170 just because he was given a notice under 170. पुलिस के नोटिस को, आप ऑर्डर को आपने वायलेट किया, इसलिए डिटेन कर लिया. और फिर इस केस में ये बताया कि 1000 से ज़्यादा लोग डिटेन्ड हैं फॉर डिफरेंट पीरियड. किसी को 10 दिन बाद छोड़ दिया, किसी को 20 दिन बाद छोड़ दिया, किसी को 1 महीने बाद छोड़ दिया. तो इस केस में, थर्ड केस में कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उन्होंने कहा आपने एक शिवपाल वर्मा वाला केस था 2021 में, उसमें शिवपाल मौर्य के नाम अरेस्ट वारंट था, पकड़ लिया शिवपाल वर्मा को. शिवपाल वर्मा तगड़ा आदमी था, वो बीजेपी का कांटेक्ट में था, तो गया, उसने कहा कि मैं मुकदमा लूँ करूँगा, और उसको शिवपाल वर्मा को 1 हफ्ता बंद कर दिया गया. तो मौर्य साहब की जगह वर्मा साहब पकड़ लिए गए. तो वर्मा साहब ने हल्ला मचा दिया. तो फिर आनंद फानन में
स्टेट ऑफ यूपी, उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास किया, पॉलिसी ऑफ यूपी गवर्नमेंट, कोई भी आदमी अगर पकड़ा जाएगा उसको 25,000 रुपया मिलेगा। वो ये हो गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओब्लाइज किया, उन्होंने अपना जजमेंट 2-3 महीना रोक दिया, कंपनसेशन का पैसा जो था, और उसको 25,000 रुपये मिल गए। मैंने अपनी किताब में ये जजमेंट को लिखा है कि ये इसलिए आनन फानन में लॉ पास किया गया स्टेट ने, क्योंकि इसके पहले 2019 में वो इसरो वाला जो केस था जिसमें 50 लाख रुपया स्टेट को विद इन 8 वीक्स देने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, वो कौन सा केस था? अरे इसरो का साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट उसमें सेक्सुअल नहीं क्या नाम था, इसरो साइंटिस्ट हु वाज फॉल्सली इम्प्लीकेटेड एंड वो करीब 1-2 महीना बंद रहा। नंबी नारायणन वाला केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, जस्टिस मिश्रा का जजमेंट है, उसमें 3 जजमेंट्स था, कि 50 लाख रुपए 1 हफ्ते के भीतर, वो केरला गवर्नमेंट थी उनके ऊपर लगा दिया। तो इन्होंने कहा कि 50 लाख रुपए यूपी में तो हम ये कर ही रहे हैं, तो कम से कम 25,000 रुपये में लिमिट कर दो। मगर इन लोगों ने क्या किया, इस केस में इन्होंने मंसूर अहमद वाले केस में इन्होंने कहा 25,000 रुपये रोज। तो मंसूर अहमद 1 हफ्ता बंद था, तो 7 दिन का कैलकुलेट करके तो कुछ तो मंसूर अहमद को मिला, नहीं तो वो कह रहे थे 25,000 में निपटा दिया जाए। वर्मा जी को हमने 25,000 में निपटा दिया था, मंसूर अहमद 2 लाख 2.5 लाख रुपए ले गया। तो ठीक है, बट ये आर्बिट्रेरी ढंग से किसी को 25,000 रुपया, किसी को 2.5 लाख रुपया, तो इट हैज़ बिकम you end up with a situation of mockery, and you have made a whole mockery of the whole system, and it is a organized mockery which it is testing, we are testing period है। माइक कभी तेज हो जाता है, कभी हल्का हो जाता है, टेस्टिंग कहा जाता है ना। तो अभी हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, 2 साल टेस्टिंग में लग गए, होपफुली ये टेस्टिंग छोटी रहेगी, हैं? तो चलो, और वी स्टॉप हियर, एंड बिकॉज दिस इज माय लास्ट सेशन, तो मैं जितना हंसना है हंस लूँ तुम लोगों के साथ। यस